बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 12 फिजिकल एजुकेशन ऑफलाइन क्लास है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्रोनिक इंजरीज। इससे पहले हमें पता था एक्यूट इंजरीज, क्रोनिक एंड एक्यूट इंजरीज। एक्यूट इंजरीज आर दोज इंजरीज which are caused suddenly by playing या by exercising से जो इंजरीज हो जाती है, something which happen is during play या during exercise may be called the acute injuries. But after some time, when the injuries remains, when there is a constant pain for a long period, when there is something like fracture, dislocation, sprain, strain, but that at that very time we can say that it's an acute injury. But little bit, these injuries sometimes become the chronic injuries. How these become the chronic injuries? Simply, chronic injuries happen when you play or exercise for a long time. Signs of these chronic injuries are just like आज कुछ इंजरीज हो गई, आज समथिंग लाइक पुश या पुल हो गया, मसल पुल हो गया, समथिंग लाइक दैट. फिर आफ्टर अ गैप ऑफ व्हेन यू मेक अ रेस्ट, व्हेन यू मेक द फर्स्ट एड, after some time you will feel, to some extent you will feel safe, you will feel good. But whenever you try to play, जब आप खेलने की जाओगे, you will feel a pain. Yeah, whenever you try to move that body part, so you will feel swelling, worm bas, yeah, pain bas. Sometimes when you are rest, you are looking very good, you are looking feel very comfortable. Simply acute injuries वो इंजरीज होती है that happen during the play, but to some extent when these injuries remains for a long time, when these injuries remains for a long time, when these injuries remains for a long time, or when these injuries caused the severe pain, when you move that body part, when you exercise, फिर उसमें problem हो जाए. For example, if during a play you will feel a sprain, you will feel a sprain in your ankle में sprain हो गई, that it may be tear of ligaments या it may be damage of ligaments. तो उससे क्या हो जाता है, after some time you will feel good when you rest, when you make the proper medical checkup, when you make the first aid. But after a long time, when you feel when you play कि उसी जगह पे फिर दर्द शुरू हो जाएगा, या इसमें वर्मा लग जाएगा, वो स्वेलिंग लग जाएगी, ये पेन फील हो जाएगी, या यू फील इचनेस, यू फील मतलब थोड़ा इचनेस हो जाएगी व्हेन यू रेस्ट या व्हेन यू आर इन रेस्ट. बट आफ्टर सम टाइम व्हेन यू ट्राई टू प्ले अगेन, व्हेन यू ट्राई टू प्ले एक्सरसाइज या समथिंग लाइक दैट, आपको पेन फील हो जाएगी. दैट विल बी कॉल्ड द क्रोनिक इंजरीज. एंड देयर आर सो मेनी टाइप ऑफ क्रोनिक इंजरीज दैट कैन हैपन. But how I should guess, there are the signs? What are the signs of the chronic injuries? इसमें क्या हो जाता है, when we stop playing या when we stop exercise, we did not feel pain. But whenever we try to play, जब हम खेलने के लिए जाएंगे या जब हम एक्सरसाइज के लिए जाएंगे, वी फील ए मतलब क्या लेजीनेस, वी फील ए पेन, वी फील ए स्वेलिंगनेस, so that these exercises may harm that injured part. And after that, when we try to exercise that part, it causes so many injuries. So that we have to, these are the signs when you try to play, when you try to move, there causes severe pain and swelling. इट मे बी लाइक जैसे कि इंजरी पार्ट में क्या स्वेलिंग हो जाएगी, पेन हो जाएगी. और समटाइम्स इफ यू ट्राई टू पुट अ वेट ऑन दैट बॉडी पार्ट, अगर आप वेट डालने की कोशिश करोगे उस बॉडी पार्ट, उसमें भी क्या पेन हो जाएगा, उसमें भी कुछ प्रॉब्लम. या समथिंग दैट एक्यूट इंजरी जो होती है, पुरानी इंजरी जो होती है, दैट हर्ट्स यू, वो क्या हर्ट करेगा व्हेन यू ट्राई टू प्ले समथिंग, मतलब एन ओल्ड इंजरी जो पहले महीने पहले हो गई, 2 महीने पहले हो, फिर उसको हमें लगेगा कि इट्स स्वेल्स, इसको स्वेलिंग हो गई है. या इफ वी डज नॉट फील द नॉर्मल अबाउट आवर जॉइंट्स, इफ देयर इज अ जॉइंट डिसलोकेशन या फ्रैक्चर, आफ्टर सम टाइम जब ये रिहेबिलिटेट हो जाएगा, तो फिर हम जब एक्सरसाइज करने की कोशिश करेंगे और कुछ करने की कोशिश हो जाएगी, उससे क्या हो जाएगा, वी डिड नॉट फील द नॉर्मलनेस इन आवर जॉइंट, या वी डिड नॉट फाउंड नॉर्मलनेस इन आवर बोन्स. Something, these are the signs of an injury. And how should we treat them? First we have to make the first aid. After that we have to make, in first aid में क्या हमें, we have to use the rice, means rest. We have to make the complete rice. We have to make the complete rest. We have to make to reduce the swelling. We have to relieve the pain by massage. We have to relieve the pain by cryotherapy, by hydrotherapy. जैसे कि heat and cold therapies देनी है उसको. Yeah, simply we have to make a speed. We have to different kind of follow. Simply we have to
we have to normalize the pain. The chronic injuries are those injuries जिससे क्या हो जाता है, after a long gap of period when there is an injury, वो इंजरी फिर से हमें प्रॉब्लम करने लगेगी, जैसे कि उसमें पेन हो जाएगा, जैसे उसमें स्वेलिंग हो जाएगी जब हम मूवमेंट करेंगे, तो उसी को बोलते हैं क्रॉनिक इंजरीज. साइंस क्या होते हैं, जब हम खेलने जाएंगे तो उसमें पेन हो जाएगी, उसमें स्वेलिंग हो जाएगी, नंबलनेस हो जाएगी, या समथिंग ओल्ड इंजरीज कोई हो जाती है, उसमें क्या वी फील हार्ड टू पुट अ वेट ऑन इट. We feel unsafe to move it. Sometimes means the acute injuries, वो injuries होगी that happen, और after some time they rehabilitate हो जाएगा. But some acute injuries did not rehabilitate. जब वो properly rehabilitate नहीं हो जाएगी तो उससे क्या, that becomes the chronic injury. These are the known as the chronic injuries. And simply chronic injuries का यही है कि इसमें साइंस यही होते हैं कि जब हम ठीक हो जाएंगे, फिर हम जब वही एक्सरसाइज करने लगेंगे या कोई खेल में हिस्सा लेने चाहेंगे, तो उससे क्या हो जाएगा, इसमें एक्यूट पेन हो जाएंगे, स्वेलिंग हो जाएगी, इचनेस लगेगी, या वी फील अनसेफ टू पुट अ वेट, जब हम अपने इस पे वेट नहीं डाल सकते. समथिंग लाइक दीज थिंग्स हैपन फॉर these chronic injuries, but major cause of the chronic injuries are the acute injuries.